तो आज हम फिर से शुरू करते हैं अपना अगला खंड, संज्ञा खंड पे चर्चा करेंगे। मुझे ख्याल है कि हमने जब संज्ञा खंड का काफी डिटेल स्टडी किया था, तो इट शुड बी फ्रेश होपफुली इन द मेमोरी. What I propose is to ask and see how many of you can reply to these. तो पहले बात है कि संज्ञा का तात्पर्य क्या है. What is संज्ञा? Who will reply? क्योंकि हमें है ना, संज्ञा क्या है, उसका ओरिजिन क्या है, उसका आपकी जिंदगी देखने का नजरिया, perception, the way you look at things. Yeah, that is one aspect of it. And another aspect is very functional. The functional aspect of recognition. Recognition, yeah. दो चीजें, एक है फंक्शनल एस्पेक्ट कि हम पहचानते हैं, दूसरा है फिर उस जो चीज पहचानी गई उसके प्रति हमारा दृष्टिकोण क्या है, हमारी धारणाएं क्या है, और वो धारणाएं कैसे बनती हैं. Based on our memory and past experience. Experience. Yeah. हमारे अनुभव के आधार पे उनको उसको देख के वेदना कैसी होती है, वेदना के आधार पे. आपको याद होगा हमने मधु पंडित का सत्ता को कोट किया था, उसमें इसकी चर्चा होती है कि जब कोई इंद्रिय के सामने उसका ऑब्जेक्ट आता है तो विज्ञान जागता है, वेदना जागती है, संज्ञा जागती है, और उसके अनुसार फिर आगे प्रपंच चलता है, विचार चलते हैं एंड सो ऑन. तो अगर कोई चीज हम पहली बार देख रहे हैं तो इस तरह से होता है. कोई चीज पहले देखी हुई है दोबारा आती है तो फिर हम अपनी मेमोरी से उसके बारे में जो हमारे इम्प्रेशंस हैं, जो हमारी कंडीशनिंग के कारण बने होते हैं, तो वो संज्ञा कहलाते हैं. संज्ञा का भगवान ने तुलना किससे की, आपको याद है? संज्ञा की तुलना फैन पिंड सूत्र में किस तरह से की थी? जैसे रूप की तुलना की थी लंप ऑफ फोम से, वेदना की तुलना की थी बबल्स जो पानी में बूंदे, बारिश की बूंदें गिर रही हैं, उसी तरह से केले के उससे या मिराज से, केले के उससे आई थिंक, केले के वो लेयर्स संकारा तो फिर ये मिराज होगा. मिराज क्यों होगा मिराज? What does it mean? Because perception है, चेंज होता रहता है. माने it is not what it seems. What the truth may be different. आप किस एंगल से देख रहे हो उस पे डिपेंडेंट है. It could be same thing, could be different for different people. Yes, and it depends on मिराज की क्या कैरेक्टरिस्टिक होती है कि जो सत्य है वो वैसा नहीं है जो दिख रहा है. हम उसके आधार पे उसको कहते हैं कि यहाँ पानी आ रहा है. ये जब समझ जाते हैं तो कहते हैं वहाँ पानी वानी कुछ नहीं है, ये हमारा भ्रम है. तो वो क्यों होता है ऐसा? क्योंकि हम जो अपीयरेंसेस हैं उनके आधार पे इवैल्यूएशन कर देते हैं. तो यही कैरेक्टरिस्टिक संज्ञा की भी है कि हम अपीयरेंसेस के आधार पर जो इवैल्यूएशन करते हैं वो प्रायः ठीक नहीं होता, और वो हमारा पर्सनल इवैल्यूएशन, अलग अलग लोग उसको अलग अलग तरह से देखते हैं. So this is clear to everybody, I am sure. So कितनी तरह की संज्ञा है? क्योंकि हम संज्ञा को समझना चाहते हैं, तो संज्ञा कितनी तरह की है? 10. बेसिक तो 3 ही होंगी, उसके बाद बहुत सारी हैं जो at each sense door. You are mixing, yeah. हाँ, each sense door, yes. Each sense door. So that will be called रूप संज्ञा, शब्द संज्ञा, गंध संज्ञा, रस संज्ञा, पोटब्ब संज्ञा, धम्म संज्ञा. जो एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट है उसके हिसाब से उसका नाम दिया जाता है. तो रूप संज्ञा का कोई उदाहरण बताएंगे? Lion, tiger, tree. What my perception is saying what it is.
रूप से जो मुझे समझ में आ रहा है. तो वो What तो I can see it as. या थर्ड वो तो उसका रिकॉग्निशन हुआ और उसके बारे में धारणा. ट्री हमें ऑक्सीजन देता है, टाइगर इज फिरोशियस, ये मेरी संज्ञा है टाइगर या वाइल्ड एनिमल को लेकर. And then you apply it to people. That's what really matters the most in our life, isn't it? हम किसी को देखते हैं, उसके बारे में पहले तो पहचानते हैं, अच्छा ये पायल है, फिर हमारे परसेप्शंस है पायल के बारे में, हमारे व्यूज हैं, हमारी धारणाएं हैं, ओपिनियंस हैं, प्रेजुडिसेस हैं, जो भी है. So you can see how they are going to be important in our day-to-day life. क्या रूप संज्ञा का उदाहरण दे सकते हैं कोई, जिससे कि क्लैरिटी आए कि डे टू डे लाइफ में कैसे वो इम्पोर्टेंट है? सर सॉरी, क्वेश्चन मिस हो गया. With an example, can you illustrate how the Saññā works to create our interpersonal interactions and affects our interpersonal interactions? हाँ, इंटरपर्सनल तो संज्ञा ही है. व्हाट आई थिंक आई एम स्टैंडिंग 6 and 9 का जो होता है, जैसे मैं जहाँ खड़ी हूँ मुझे लगेगा वो 6 and I will think I am right, but if I don't walk in other person's shoe I will not know उसका परसेप्शन क्या है. सर आप जैसे एग्जाम्पल देते हैं, सारे पॉलिटिशियंस ऐसे ही है. देयर इज अ kind of a set sanya based on their hearing and memory. We assume without experiencing it. या मैं अपने ऑफिस का एग्जाम्पल दे सकती हूँ कि जैसे फर्स्ट टाइम मैं जा रही हूँ और मैं कुछ सुन रही हूँ किसी के बारे में, तो मैंने एक अजम्पशन परसेप्शन बना लिया है कि सो एंड सो पर्सन इज लाइक दिस ओनली, वेरी स्ट्रिक्ट और वेरी रूडली स्पीकिंग. विदाउट इवन एक्सपीरियंसिंग मैंने अपनी एक परसेप्शन धारणा बना लिया है उनकी, उस व्यक्ति के ऊपर. And when I'm coming in contact, based on that, I behave, or they behave and I assume in such a manner. और आपने वो लाइन की भी एग्जाम्पल दिया था वीडियो के थ्रू. सर आपको आवाज आ रही है? सर you're on mute. My granddaughter wanted my attention for some minutes. Okay. जो हमारा परसेप्शन पीपल के बारे में है, पॉलिटिशियंस से एक जनरल परसेप्शन हो गया कि more like a about specific people. I gave an example of office, like, you know, where I heard about a certain person, that so and so person is like this, and I have created a perception before I could meet that person also. कि ये ऐसे ही है. She's. So how does it affect me? I based on my perception, there is an unpleasant feeling, which is unpleasant vedana भी जागती है, और मैंने एक perception assume कर लिया है based on the information what I heard about the person. And reaction भी वैसा ही आएगा फिर जो perception है. Okay. Let's go to next. Shabda Saññā. Can you give an example of what is Shabda Saññā? Anybody? शब्द संज्ञा का उदाहरण दे सकते हैं? सत्य संज्ञा जो हमने कहा था, किसी की आवाज मैंने, जैसे कि आपकी आवाज मैंने सुना, like I'm not able to see you on the screen, but I heard the voice and I assume कि ये perception, मेरी perception is saying that this is sir's voice. And then I make a further dissect it. This voice is good, bad, pleasant, unpleasant, or I like it or I don't like it.
various things can प्रपंच चल सकता है, and based on that hearing and memory I form an opinion about it. Same goes for music, types of music or other kind of birds का voice है या क्या है, वो भी संज्ञा वो करती है, decide. ने वो एग्जाम्पल्स भी दिया था सर, you know, म्यूजिक के बारे में. नाउ दैट while saying I could recollect अलग अलग साउंड्स, म्यूजिक जो क्लासिकल, वेस्टर्न, वो सब आपने सुनाया था. एंड हाउ डू वी फॉर्म द परसेप्शन बेस्ड ऑन द साउंड ऑल्सो. में था ना दैट लेडी क्राइंग, तो हमने एक अज्यूम किया था कि इट मस्ट बी लाइक यू नो एट द फ्यूनरल. ऐसे हमने एक अलग परसेप्शंस बना लिए थे विदाउट नोइंग व्हाट द ट्रूथ इज. सर आप म्यूट पे हैं. Next is Gandha Saññā. So what is Gandha Saññā? Maybe have some other people also join the discussion. आईआईटी का आपने बहुत बढ़िया एग्जाम्पल दिया था गंध संज्ञा के. तो मैन्योर की जो बदबू आ रही थी तो उसको हटा देना चाहिए या नहीं हटा देना चाहिए, उसके ऊपर भी बहुत बड़ा 2 ग्रुप्स हो गए थे. दैट इज आल्सो इन रिलेशन टू गंध संज्ञा. Any other example? Would anybody like to? जैसे कई लोग गर्मियों में सिंथेटिक कपड़े पहनते हैं और फिर वो एक बार पहन के फिर दूसरी बार पहनते तो कितनी पसीने की बदबू आती है, तो लगे कि ये तो बहुत गंदी लोग है. इस तरह के भी परसेप्शन होता है कि ये तो बिल्कुल फिल्दी लोग है, लेट्स कीप अवे फ्रॉम देयर. इस तरह के भी परसेप्शन होता है, नॉट नोइंग कि वो क्यों नहीं बदल सकते या क्यों नहीं धो सकते या व्हाट आर द रीजंस दैट यूजिंग द सेम क्लॉथिंग. दैट इज आल्सो इन रिलेशन टू गंध संज्ञा. सर आपने वो परफ्यूम का भी एग्जांपल, स्ट्रॉन्ग फ्रेग्रेंस, लाइक यू नो where we make an assumption why people use such strong perfumes or Yeah. Good. So next is Ras Saññā. What is Ras Saññā? Food taste. So how does it influence the householder's life? Difference of Ras Saññā in a family. such and such food is good for health, this should be eaten, this should not be eaten, या मॉर्निंग पे ब्रेकफास्ट ही खाना चाहिए या दोपहर को ब्रेकफास्ट नहीं खा सकते हैं. Is that Ras Saññā? टेस्ट पर. टेस्ट वाली बात है, not the thought about healthy food or what is healthy food or what is breakfast should be taken or not. That is not come under Ras Saññā. Yeah, correct. That will come under Dhamma Saññā. Dhamma Saññā. Sorry. So what is Ras Saññā? Bitter sweet. करेला की बात हुई थी सर. कड़वी चीज मतलब this is going to be bitter, this will taste. Karela is like, but that is fruit. I'm not getting it.
लेकिन सर काफी संज्ञाएं काम करती हैं जब हम स्पर्श वो खाते हैं, स्वाद लेते हैं, तो स्पर्श भी होता है, उसमें सुगंध भी होती है। That's yes, that's true. That's true. Very true. Very true. So रस संज्ञा का रोल जो है in terms of same food, somebody may like its taste, somebody may not like its taste, and then you may have difference of opinion and all the consequences which emerge from difference of opinion. So you can see the importance of these. I think I already discussed quite a lot, so I'm not trying to repeat everything. Potabba Sanya, anybody remembers? What is Potabba Sanya? रूप, शब्द, गंध, रस के बाद क्या रह गया? टच होगा फिर ये तो बच्चा टच है. Touch on the body, skin, anywhere touch on the skin, and there is a perception associated with it. What are the typical examples? A touch might feel good, touch might feel bad. Yeah, that is the one aspect, emotional aspect of it, emotional touch. There's also a more rudimentary aspect of it. या एक अनजान से टच होना, एक सिबलिंग से टच होना, एक स्पाउस से टच होना, ये सब चीजें डिफरेंट, उसमें डिफरेंट फीलिंग आएगी. मतलब टच मतलब वो संज्ञा से ऑपरेट करेगी. There, that is what I was saying. It's true. That is the emotional aspect of it. Emotional. But there is a very direct, matter of fact aspect of it. कि touch जो है ठंडा है कि गर्म है. Very crucial thing which we always feel. आजकल हम ठंडे प्रदेश में है तो बाहर निकलते एकदम भयंकर ठंड लगती है. गर्मी होती है तो खूब गर्मी लगती है. That also is a part of the touch, and that also is deceptive because it depends on relative change. See, so the touch has a thermal aspect is also there in the touch, and then there is the emotional aspect of it. Touch का हमारे जीवन में बड़ा भारी महत्व है. ये टच जो है, फोटब जो है, ये बाकी सारे इन बाकी 4 संज्ञाओं से एक स्पेशली डिफरेंट है. टच की एक स्पेशल क्वालिटी है या कैरेक्टरिस्टिक है जो बाकियों में नहीं है. क्या है ऐसा? I remember I had mentioned that. I think it's physical proximity or physical. Anybody else? Anything more clear, more direct? डायरेक्ट कांटेक्ट. सॉफ्टनेस, हार्डनेस, इसके बारे में भी बात हुआ था क्या सर टच में? Yeah, of course. That also is a part of the touch. Yes. I'm saying, is there a special nature of touch which is different from रूप, शब्द, गंध, संज्ञा and rasa? That you can never stop touch. आप आंख बंद कर दीजिए, रूप नहीं दिखेगा. कान में कुछ ठोक दीजिए, सुनना बंद हो जाएगा. नाक बंद कर लीजिए, स्मेल आनी बंद हो जाएगी. खाइए मत कुछ, रस नहीं आएगा. But there's no way you can prevent contact at the skin. कुछ ना कुछ हवा ही टच करती रहेगी. So that's it. That's why it is pretty important to recognize the
crucial nature of touch. And then the last was Dhamma Saññā. We had spent considerable time in clarifying what is Dhamma Saññā. Thought. Yeah, thought is not Dhamma Saññā. What exactly is it? इसको जैसे बाकियों का आपने define किया वैसे इसको भी define करना होगा ना, example के माध्यम से. Mathematical concepts, complex number theories. Yeah, let's do more down to earth stuff. अभी तो मैंने कुछ कहा था जो उसको हमने धम्म में डाल दिया था. Emotional. Father should be like this, mother should behave like this. कि ये politicians ऐसे होना चाहिए और government workers are XYZ. Private office के ऐसे रहना चाहिए. All those will come under Dhamma Saññā. And if you take Dhamma as the teaching of Buddha, then Anicca, Dukkha, Anatta. yes, that's true. What, anything else? I had given some examples of the typical things in which we grasp the teachings in a particular way. सर धम तो स्मॉलेस्ट उसको भी बोलते हैं ना, जब ब्रेक डाउन करते हैं हम नीचे उसको, तो वो इसमें नहीं आता. Here we are talking about Dhamma. What is the definition of Dhamma here? Yeah. Okay, that's I think a good question. I can just try, sir. Wait, Geeta. Let us answer this question. Sorry, I didn't hear. Sorry. Let us answer this question, or by asking you. The word Dhamma, when you use it in Saññā, what does it mean? रूप शब्द रस तो क्लियर है. तो मैं What does it mean? कि मैं बहुत I don't know, I'm just assuming and I'm just making an attempt. You know it. I'm not ready to accept you don't know. Think that. मैं बहुत अच्छी साधक हूँ, मुझे ऐसा रहना चाहिए. वो तो बात की बात है. मैं कह रहा हूँ कि बेसिक डेफिनेशन क्या है धम्म की, क्या वो anything and everything comes under Dhamma. So that is what we will talk about Dhamma here in Dhamma Saññā. What are your experiences right now? What is the characteristic of Rupa? Why we call Rupa Saññā? रूप किससे देखा जाता है? आंख से. चक्षु का ऑब्जेक्ट रूप है. कान का ऑब्जेक्ट क्या है? शब्द. जीभ का ऑब्जेक्ट क्या है? रस. और नाक का? गंध. और काया का? स्किन. काया तो स्किन तो रिसेप्ट वो है ना, दैट इज मीडियम. स्पर्श मटेरियल होता है. रूप इंटरनल सेंस ऑर्गन, इंटरनल आयतन. उसका कॉरेस्पॉन्डिंग एक्सटर्नल आयतन क्या है? स्पर्श. तो इसी तरह से धम्म भी एक एक्सटर्नल आयतन होगा किसी चीज का. धम्म है ना, विचार. It is the object of mind. It is the object of mind. Okay. So when you use Dhamma here, it refers to object of mind in that sense. Okay. So now you can use objects could be
referring to because mind analyzes both the physical objects as well as the mental objects by itself. Mind ki a characteristic hai. So we had said that the thoughts about physical objects will not put. We'll put the pure mental perceptions there for the sake of clarity. You know? So various kinds of thoughts. We had said which influence our judgment, influence our outlook towards the world. जैसे हमने कहा कि भाई हाँ पॉलिटिशियंस के बारे में एक परसेप्शन है या धम्म के बारे में परसेप्शन है, टीचिंग्स के बारे में परसेप्शन है, बुद्धास टीचिंग्स आर द बेस्ट, बाकी सब टीचिंग वही गलत हैं, और इसी तरह से साधना जो मैं साधना कर रहा हूँ वही ठीक है, दूसरे तो कर रहे हैं वो ठीक नहीं है. They are just kind of thoughts, which are perceptions, and they play havoc with our practice. Perceptions can be, we had discussed, you know, there can be perceptions which lead to progress in Dhamma, there can be perceptions which lead to deterioration in Dhamma. We have to be careful on that issue. So there it seems to me that Bhagwan has ordered these senses in a particular way. I think when you look at Chakshu, everything is at a distance from you, that you see more or less some distance. But as you go into the other sannyas, the objects come closer and closer till they come inside you, like in mind. The objects are inside the mind. Does it make sense? I don't know. Just I think one can make that observation, yeah, but maybe that must be, I don't know whether the Buddha ordered it in this manner or not. But yeah, this is usually the order is given like that. So you can say the Roop is far away, Shabd is also far away, but Gandh is also can be far away, but how far away? Taste has to be at the tongue, so there has to be touch at the tongue, and therefore it cannot be object lying far away, it has to touch. Force of Phuttaba is by very nature touch, and so one can say that, but does it have any importance? I don't know. No, I'm just it occurred to me, so let's see whether there is any. Yeah, I have not noticed any such discussion on this aspect. So the Dhamma Saññā has that role that when you look at the things in a different perspective, then Dhamma Saññā can be transformed into Panya by looking at the phenomena with Yoniso Manasikara. When you look at things more deeply, then the Saññā slowly can be transformed. And that's where those other 10 Saññās which you had studied last year, they come into the picture. So could it be, just since we're talking about it, that, for example, Manovigyan is one thing that really perhaps influences our personality a lot. It influences our everything, perceptions, or whatever you may think. So in some sense, perhaps there is some influence of the way things appear. If they appear right inside you, then they are inside you and they influence you in a particular actually way. To say that it is inside is also not really correct, actually. Then because mind is something which is immaterial, so it doesn't have any locations. But of course, colloquially one can say so, it feels like that, but actually it doesn't have any location. So the Arupa Khandhas cannot be located anywhere, and therefore there isn't much we can gain by that contemplation. That's the way I look at it, isn't it? Okay. Yeah. Thank you. So what is the key thing we see when we want to move from Saññā to Panya? The attention, quality of attention. So if you give
what's called Yoniso Anasikara, which means looking at the roots, and it is free from the unwholesome roots. Which are the three unwholesome roots? Greed, hatred, and delusion. If you look at it with freedom, then we can see the things in a more clear way. Then the mirage aspect can be overcome, and we can really move in that direction from Saññā to Paññā. Now, what is the origin of, you remember? It's of course quite straightforward, but so these are the various descriptions of Saññā. So what is Saññā? The next statement we are asked is, what is the origin of Saññā? How do you say? Did anybody put it clearly? What is the origin of Saññā? You have discussed it. Vedana can be origin and experience can be origin. कई बारी pleasant unpleasant वेदना से हम संज्ञा को decipher करते हैं, माने decide करते हैं, और कई बारी अगर मिला ही नहीं है किसी से तो वो वेदना पे होता है, नहीं तो otherwise memory से होता है. Yeah, but we define, technically we define origin in a particular manner, na? You remember? I think you may not have attended those. So Contact. yeah, because as a mental factor, it arises when there is a contact. So we say phassa samudaya, saññā samudaya. And therefore phassa nirodha, saññā nirodha. And we've already discussed it more than once. What does phassa nirodha imply? And what is the path towards phassa nirodha? Which is hariyo athangiko maggo. That is the, and there's, it's called Saññā nirodha gamini patipada. So in various khandas, he uses different words. Rupa nirodha gamini, Vedana nirodha gamini, Saññā nirodha gamini, same Ashtangik marg. And I hope by now, having discussed it more than few times, it should be clear what exactly is being said. Then the triad of जो 87 में 7 चीजें थी ना, 4 तो ये 3 जो है वो इंटरेस्टिंग होगा कि संज्ञा में आस्वादन क्या है, आदीनव क्या है और निस्सरण क्या है. Can we have some discussion on that? Proliferation होगा इसका, gratification नहीं, क्या बोलते हैं सर? हाँ, आस्वादन क्या है, संज्ञा का gratification क्या है? What does it mean? We had used a standard definition of gratification in everything. In रूप, in Vedas, and everywhere same definition is used. Remember? इस रूप के आधार पर जो मन में प्रसन्नता जागती है, सुख जागता है, उसे रूप का आस्वादन है. वेदना के आधार पर जो सुख और आनंद उत्पन्न होता है, वो वेदना का आस्वादन है. उसी तरह से देखा जाए तो संज्ञा के आधार पर जो सुख और आनंद उत्पन्न होता है, वह संज्ञा का आस्वादन. Now, what does it mean? Can we have some discussion on that? What does it mean? संज्ञा के आधार पर सुख और आनंद उत्पन्न होता है. जब हम उस पर रिएक्शन देते हैं तो उसी में हम सुख और आनंद प्राप्त करते हैं. क्यों, किस में रिएक्शन देते हैं? संज्ञा इज रिकॉग्निशन ना. संज्ञा का मतलब है कि हम चीजों को रिकॉग्नाइज कर रहे हैं और उसके प्रति हमारी कोई धारणा नहीं तो नहीं. हाँ, ये करेक्ट वेदना हुआ है तो जी. तो वेदना के आधार पर तो स्पष्ट ही है. रूप का भी हमें कुछ डिस्कशन करना पड़ा था कि रूप के आधार पर कैसे सुख और आनंद उत्पन्न होता है. तो इसी तरह संज्ञा के आधार पर सुख और आनंद उत्पन्न होता है. इसका कोई उदाहरण हमारे अपने अनुभव में आया क्या? हमारे व्यू को जो मैच करता है, वी लाइक दैट, एंड जो माने प्लेजेंट लगता है और जो हमारे एक्सपीरियंस और हमारे उस पे नहीं आता, वो वी परसीव एज एनिमी. सॉरी, ये नहीं है. Yeah, that's okay. Good evening, sir. Can we give example of from one of the sannyas, Rupa Saññā, Shaddha Saññā, Gandha Saññā, and so on? Yes, sir. In Saññā, I used to,
when the garbage picker used to come, I used to like feel a little aversion. But when I attended your class, after that, I let it pass. It strike the nose, and I used to feel a little bit uneasy, but then I let it pass. Earlier, I used to feel uneasy, and also, sir, as a whole, in my little experience, I think I used to be very extreme, and there was no gray, only white and black. So either very positive perceptions or very negative perceptions, and it's fixed. Nobody can change it. Like ऐसा हो सकता है. I never used to think. I used to think जो सोच लिया बस हो गया, ठीक है, यही है, यही होगा. But after attending your sessions and also Mahapanya ji's body language, even after being he's so modest, he's always like maybe. So that I tried to inculcate in me also that ऐसा भी तो हो सकता है, वैसा भी हो सकता है. I used to think like that way, so that made my sufferings less. Having fixed perceptions led to sufferings in like emotional baggage was there. Sir, you're on mute. मतलब आपका माइक है ना, बार बार आप क्योंकि आप बंद करते हैं ना उसको. सो is there a way that Saññā itself can give rise to happiness? So having neutral, I think as a whole being neutral, can help, I guess. Not having fixed perceptions. Like you can think of other perceptions from other side also and from your side also. Yeah, that's a definitely wise thing to do. But that's not the question which is being asked here. I think the renunciate prasannatta that you talked about rises from the three basic sannyas of anicca, dukkha, and anatta. That recognition that when it is a deep felt experience for somebody, then it can give rise to that. I don't know whether that's what you asked or whether. I'm just trying to put the simple statement here. Can The I try, definition sir? which is given by the Buddha in the Sattatthana Sutta definition, yeah. Yan sanya paticca upajjati sukhang somanasam ayang sanyaya asado. संज्ञा के आधार पर जो सुख और सोमनस से जागता है वह है संज्ञा का आस्वाद. Is the literal translation of Buddha's words on आस्वादन. So I'm just trying to probe कि संज्ञा के आधार पर सुख और आनंद होता है क्या, हमारे अनुभव में आता है क्या? Sir, can I try? हाँ, very much sure. जैसे कि like I have a perception like I'm a very good practitioner. I practice generosity. तो सब मेरी तारीफ करते हैं तो I take gratification in that because seeing the danger कि ये I mean तो अच्छा लग रहा है और चाहिए और like I don't then I realize the danger in it by seeing that gratification कि सब I'm a very good donor. I practice generosity. मैं बहुत अच्छी हूँ, मुझे ऐसे ही रहना चाहिए. That's a perception which I form about myself. Good. So the perception about myself that I am a good meditator or I am a good, and when it gets corroborated by others, then it gives rise to joy. Yes. That's what you're trying to say. Yeah. Any other example? Sir, like I think in my perception, if there is an enemy country and उसके ऊपर उसमें disaster या कुछ वो होता है, तो मुझे I mean it doesn't trouble me as much as my perception about our country. So if something good is happening in our country, it gives rise to a lot of pleasure in me. माने मेरा उसमें कोई direct वो नहीं है, but एक perception है country को लेकर. तो क्या वही ना संज्ञा क्या है, वही कुछ बताओ ना. What is your संज्ञा which is giving rise to this happiness? Identify that. What is the perception?
The statement you have made is okay, but I want to धम्म संज्ञा हुआ, धम्म संज्ञा हुआ, थॉट को लेके हुआ ना, थॉट से हुआ तो संज्ञा को डिस्क्राइब तो करो ना, क्या संज्ञा है? सर थॉट को लेके हुआ ना, क्योंकि तो ठीक है, वो थॉट क्या है वही तो पूछ रहा हूँ. What is that thought? I'm wanting you to put it down in words. अटैचमेंट है, इस वजह से. किसके प्रति ये थॉट? संज्ञा क्या है? What is the संज्ञा? That's the question. See, once we are kind of using colloquial language and things of that kind, then we lose sight of the technical aspect. कि संज्ञा क्या है जिसके आधार पर सुख हो रहा है या दुख हो रहा है? So we must identify that. जैसे गीता ने कहा कि हाँ, संज्ञा ये है कि आई एम अ गुड मेडिटेटर, और जैसे ही वो कोलैबोरेट होती है तो प्रसन्नता जागती है, सुख हो जाता है. और उसने एक्चुअली नेक्स्ट लाइन भी कह दी थी, ये संज्ञा अनित्य है, दुख है, अभी परिणाम धम्म है, क्योंकि मेरी अपने परसेप्शन में मैं बदल जाऊंगा, मुझे लगने लगेगा कि नहीं मेरे को समझ नहीं आया, एंड देन इट क्रिएट्स सफरिंग. Leave aside others' perception, even my own perception keeps on changing. So उसमें जो आस्वादन लेने की टेंडेंसी, उसमें जो खतरा है वो समझ में आने लगता है. तो फिर वो उसका थर्ड एस्पेक्ट है कि संज्ञा के प्रति जो छंद राग विनय, छंद राग पहानम. तो ये संज्ञा को प्रति जो हमारा राग है उसको to put it aside and eventually to completely abandon it. But we understand that Saññā is impermanent, and therefore any attachment to it is going to cause suffering. And it is impersonal because it is created by conditions. But it will be good to see some examples of it. सर मुझे समझ में नहीं आया, मैंने आपने पूछा उसमें संज्ञा कौन सी है, वो राग संज्ञा है? आप बताओ ना, सोचो ना, विचार करो. सर मुझे तो संज्ञा का क्वेश्चन मतलब, ask yourself the meaning again of Saññā. Saññā is perception. हाँ. Perception about what? Perception about everything around you. नहीं, जो तुम्हारी एग्जाम्पल है आप उसमें पूछ लो ना, वो छोड़ो ना उस बात को. हम तो एग्जाम्पल. Perception about my country, perception about the country, perception about the enemy, perception about. So what do you mean by perception about the country? What does it mean? I mean, country is a concept. तो अगर आप उसमें डालने 6 उसमें डालने के उससे बोल रहे हैं तो वो तो धम्म. अगर कुछ अच्छा होता है तो मुझे खुशी होती है, दूसरे कंट्री में अच्छा होता है तो मुझे खुशी नहीं होती. There is some basis, underlying assumption in that two statements. Try to find that. Anything else? Anybody else would give another example, maybe? I can try one more. It is, I don't know, I mean, it's a very vague, like long time back I had this perception people should, retire at the age of 35 or 40 so that the others should get an opportunity to work and get, take on a lot of, what do you say? Of work, so they should be given this opportunity, or at least after 60 nobody should work, like there should not be any extension in the office. ये मेरा बहुत एक strong perception बहुत पहले था.
So that was like, I used to think कि ये बहुत अच्छा perception है, and I never used to think as a perception. तो मुझे लगता था कि ये बहुत ही अच्छा विचार है और ये इस पे सब काम करना चाहिए. So that is how, like, I created this perception कि it's a very good thought, it's a very good idea, and तो मैं सबको बोलती भी थी. So that's a perception without seeing the danger in it कि वो जब वो उससे मैं अटैच हो गई और जैसे ही वो अटैचमेंट हुआ, जब हो नहीं रहा था, आई कुड दुख शुरू हो गया था वहां पर ही. आई मीन दिस इज लाइक लॉन्ग टाइम बैक. तो ये भी समझ में आया कि organization is just a bunch of people who will come and go, so I don't have to cling to it. I'm not sure if it's a right example, but it's a very vague thought process which I had long time back. तो मुझे उससे दुख भी पैदा हुआ जब जैसे मैंने विचार किया था वैसे हो नहीं रहा था. So that is one of my thought process perception which I had, very strong perception. The second perception I had was like youngsters should become a politician, not at a very old age. So that was also a perception which I carried for a very long time. Yeah, but how does any joy or somanasya arise on that basis? That's your own, within your own self, you think that it was very good. That's what you're trying. Yeah, it was on my own thought process. Like, what I was thinking, I was assuming it as a perception. It's a very good thought, what I have. So whenever you would remember, you will feel happy. That's and when I used to speak to others, they used to just like, say it is rubbish what you're thinking. तो वहीं पे बहुत टाइम के बाद में वो दुख भी शुरू हो गया था, because there was a lot of arguments also which happened in that. So, because I was sticking to my thought and I was getting attached and clinging to it in a very subtle way. तो वहां पर एक when people used to disqualify this thought, सीधा they used to drop it, like कि ये ठीक नहीं है जो तुम सोच रही हो. तो वहां पर ही मुझे वो एक दुख भी शुरू हुआ. उस टाइम पर चेंजिंग फिनोमिना तो पता नहीं चला, like now I could realize it, like what a stupid thought I had. And तो उससे मुझे ऐसे लगता है कि वो तो एक दुख ही वहां पर शुरू हुआ था. In that way, I was very much attached to my own thought process. Okay. Can I speak something? जी बोलिए. ठीक है, ऐसा है कि हम अब कितने सालों से भगवान बुद्ध की टीचिंग्स को पढ़ रहे हैं और उनके बारे में बहुत जानकारी मिल रही है. अब रिसेंटली दिल्ली के अंदर एक वाकया हुआ जिसमें कि एक शपथ ली गई और वो एक मॉन्क दिला रहे थे और उसमें वो ये कह रहे थे कि मैं भगवान राम को नहीं मानूंगा, मैं ये नहीं करूंगा, मैं वो नहीं करूंगा. Meaning thereby they were trying to demean everything else other than what Buddha has said or other than Buddha. तो वहाँ पे ये सुनने के बाद बहुत अच्छा नहीं लगा, बहुत बुरा लगा, क्योंकि जिस टीचिंग को हम पढ़ रहे हैं और जिनके बारे में चर्चा हो रही थी, तो उन्होंने तो कभी किसी को डिनाउंस नहीं किया और जो उनके शब्द थे उसको बड़ा मिसरिप्रेजेंट किया जा रहा था. तो जाहिर है कि उसके बाद फिर एक और वाकया हुआ और उसमें मैंने सुना कि किस तरह से सनातन धर्म जो है वो कितना पुराना है और किस तरह से we as born in India, we have every teacher has been considered as Bhagwan, like Buddha, like Jain, and every other god and goddesses that the Hindus worship. तो कहने का मतलब ये है कि एक perception है मन के अंदर that we as Indians are very lucky that we are born in this land and we have inherited the great heritage and we should be proud of it, and that there's a difference between dharma and religion. इस तरह की बातें भी पढ़ने को मिलती हैं और सुनने को मिलती हैं. So we have बहुत परसेप्शन के आधार पे सुख और आनंद उत्पन्न होता है, वो थोड़ा समझाइए. उस परसेप्शन के आधार पर एक गर्व महसूस होता है. There is a feeling of
being proud of something that we are born in this country, and that proud is not in a sense that it makes you feel in a sense to demean others, ऐसा फीलिंग नहीं है, बट डेफिनेटली इसके बारे में बहुत एक अच्छा भी लगता है और एक खुशी भी होती है। और वहां पे जो शब्द भी वही है, सोमनस्यम, मतलब एक प्लेजेंट मेंटल फीलिंग जागती है, प्लेजेंट मेंटल फीलिंग जागती है। यस यस अब उसकी सेकंड स्टेटमेंट जो है भगवान की, ये संज्ञा, ये विचार जो है, ये परसेप्शन है, ये अनित्य है, दुख है और विपरिणाम धम्मा, बदलने वाला। हाँ, ये नहीं संज्ञा में जागता, खतरा है। ये नहीं जागता, ऐसा नहीं जागता जी। इसलिए फिर उससे अगला स्टेप तो जागेगा ही नहीं नेचुरली, अगर ये नहीं जाएगा। हाँ, ये और ये इसी के साथ नहीं है, ये और भी कई चीजों के साथ है कि जहाँ संगीत के मामले में भी कई बार ऐसा हो जाता है कि कोई बहुत अच्छा गाना गाता है तो बहुत अच्छा लगता है, बहुत खुशी होती है कि वाह कितना अच्छा गा रहा है। अब बच्चों का गाना सुनते हैं, उनको बड़ा अच्छा लगता है। तो ये हाँ, फिर उस समय शायद मेरे ख्याल में वो थॉट मुझे आ जाता है कि when they will reach my age, they will also be like this, that the way I am. I was like them when I was up their age. इस तरह का भाव तो आता है। That's one thing. That is one thing. That has its own value. I'm not saying, but we have to see this perceptual issue here. हाँ, यहाँ पे हम ये डिस्कस कर रहे हैं कि संज्ञा के आधार पे कोई सुख जागता है, प्लेजेंट मेंटल फीलिंग जागती है। हाँ, हाँ, और क्योंकि संज्ञा अनित्य है, दुख है, विपरिणाम धम्म है, हाँ, ये उसमें खतरा है, और इसलिए संज्ञा के प्रति ये जो राग है उसका नहीं होना चाहिए, हटा देना चाहिए, उसको प्रहार करना चाहिए, तभी संज्ञा की चंगुल से मुक्त बिल्कुल होंगे। सही कह रहे हैं आप, ऐसा ये होता भगवान नहीं है। की शिक्षा है। तो ये हमको ये कहा जा बिल्कुल रहा है अभी उसमें उस तरफ बढ़े नहीं आए। इस पे पर हमको विचार करना चाहिए और इसके हिसाब से काम जी, करना चाहिए, क्योंकि हम 70-98 बिल्कुल सूत्र में यही थे कि 7 आयाम जो थे 4 तो पहले थे और ये 3 आयाम थे, कि इन 3 आयामों को हम रिफ्लेक्ट करेंगे तो हम संज्ञा को, मैं मेरी जो मानने का है, संज्ञा के हर एक खंड का मैंने रिपीट नहीं किया, हर एक खंड के बारे में, ये अनित्य है, ये मैं नहीं हूँ, मेरा नहीं है, मेरी आत्मा नहीं है, ये बात हम हर एक खंड के बारे में कहते आ रहे हैं। शुरू से ही हमने ऐसे किया था, चर्चा की थी, है ना। और ये सब अनित्य है, दुख है और अनात्मा है। तो उस इंसाइट को डेवलप करने के लिए भगवान ने ये तरीका बताया कि भाई अपनी जो भी संज्ञा है आपकी, हर एक संज्ञा को इस तरह से देख लो, इस तरह से जांच लो कि संज्ञा में सुख तो मिलता है, कि ये मेरा बेटा है, ये बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, एंड देन व्हेनेवर आई थिंक ऑफ हिम आई फील ग्रेट जॉय, एंड देन सिचुएशंस चेंज, और फिर वो संज्ञा बदल जाती है, फिर भयंकर दुख होता है। तो फिर कहते हैं भैया वो संज्ञा के प्रति जो राग बना रही है, जो उसके अटैचमेंट कर ली है, वो त्याग देनी चाहिए। और तभी संज्ञा के प्रति जो परसेप्शन है हमारा, जो छुपा रहता है, परसेप्शन की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि वो सामने नहीं आता है। हमारी टीचिंग में भी, प्रतिच्छ समुत्पाद में भी, आर्य सत्यों में भी संज्ञा सामने नहीं आती है, वो छुपी रहती है। इट इज बेसिकली व्हाट कंडीशंस द वेदना। हम कहते हैं ना, षडायतन पच्चया फस्स फस्स पच्चया वेदना, वेदना पच्चया तन्हा, उसमें संज्ञा तो आई नहीं। तो वी फॉरगेट दैट संज्ञा इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग कंट्रोलिंग इन्फ्लुएंस। फस के कारण जो संज्ञा जागेगी, फस से संज्ञा ना आगेगी, उसके एसोसिएटेड जो संज्ञा जागेगी उसके हिसाब से वेदना होगी, या वेदना के हिसाब से संज्ञा होगी, दे विल ऑल म्यूचुअली इंटरेक्टिंग विद ईच अदर। तो और फिर वो देयरफॉर दे इन्फ्लुएंस द तन्हा, और तन्हा होगी, या फिर हम इस संसार चक्र में जाएंगे या संसार से मुक्ति की ओर जाएंगे। तन्हा नहीं जगाएंगे, उसको देखेंगे, उसके अनित्य स्वभाव को समझेंगे, तो मुक्ति का चक्र चलेगा, धर्म चक्र चलेगा। और अगर तृष्णा जगाएंगे तो दुख चक्र चलेगा। तो वो सारा हम सामान्यतः कहते हैं कि वेदना क्या कारण, वेदना इज द क्रूशियल पॉइंट, इज ट्रू, बट वेदना इज बीइंग इन्फ्लुएंस्ड बाय संज्ञा। तो इसलिए ये जो बात कही जा रही है संज्ञा के प्रति छंद राग विनयो छंद राग बहाना, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि हमें संज्ञा के प्रति हमारी जो परसेप्शंस है
उनके प्रति जो हमारा अटैचमेंट है, जो उससे हमारी आइडेंटिटी, क्योंकि हर आदमी ये समझता है कि मेरी संज्ञा ठीक, और उसी से हिसाब से हम अपना जीवन जीते हैं। कोई गलत जानबूझ के कोई गलत बात को ये गलत है फिर भी मैं करूंगा, ऐसा तो कोई नहीं करता। Everybody thinks that whatever his ideas are, thoughts are, they are right, and therefore he lives according to those thoughts and perceptions, and वो उस तरह की विचारधारा, उस तरह के दृष्टिकोण अपने जीवन में अपनाता है। तो ये कहा जा रहा है कि वो जो तुम्हारे दृष्टिकोण है, विचारधारा है, उनको ध्यान से देखो, वो अनित्य है, दुख है, अनात्म है, और उसके प्रति अटैचमेंट को छोड़ दो। इट डजंट मीन कोई विचारधारा ही नहीं होगी, कोई दृष्टिकोण ही नहीं हो, कुछ तो होगा, बट उसको धीरे धीरे धम्मानुकूल बनाना, धम्मा पटिपदा, धम्म के अनुकूल विचारधारा को बनाना है। इसीलिए कहा गया कि जो आपको याद होगा, मैं आई डोंट वांट टू रिपीट दैट, स्थानीय भागीय संज्ञा एंड विशेष भागीय संज्ञा। जो संज्ञा जो हमको नीचे की तरफ ले जाएगी, संज्ञा जो हमें ऊपर की तरफ ले जाएगी। जो धम्मा की जो संज्ञाएं हैं, जो परसेप्शंस हैं अबाउट शीला, सामाधि, पन्या, those kind of perceptions about insight, they will take us forward. And denouncing Shilas, denouncing the law of karma, denouncing the practices of samadhi, denouncing the practices of panya, they will take us down and down. So वो सारी बातें जो हमने चर्चा की थी तब, वो सारी संक्षिप्त में इस बात में छिपी हुई है कि हमको हमारी जो सामान्य संज्ञाएं हैं, उनके प्रति अटैचमेंट को देखना चाहिए। उसमें जो खतरा निहित है, उसके अनित्य होने के कारण जो उसमें खतरा है, उसको निहित, उसके प्रति हमें सजग रहना चाहिए, ताकि एक इस खंड के प्रति भी हमारा, इस खंड के प्रति जो हमारा आइडेंटिटी है, आइडेंटिफिकेशन है, छूट सके। यही काम हम हर एक खंड के प्रति करते आ रहे हैं, रूप के प्रति, वेदना के प्रति, संज्ञा के प्रति, विभिन्न तरह से करते आ रहे हैं। वो ये बात यहाँ पे भी कही जा रही है। ये 7-58 सूत्र का जो मेन मैसेज है वो यही है। मैं एक चीज और आपसे कहना चाह रहा था, वो ये है कि हम जैसे शील की जब बात करते हैं, बीइंग पेट्रियोटिक, बीइंग full with your national spirit in your mind, should not it form a part of Sheel? It doesn't. Why? Well, that you have to ask Buddha. नहीं, but point ये है ना कि I think क्योंकि उससे काफी कुछ जो है संस्कृति के साथ जब आदमी जुड़ जाता है, उसके प्रति उसका बेसिक छिड़काव हो जाता है, तो उससे सारी बातें फिर निकल करके आती हैं। आपकी बात है, जस्ट सबमिटिंग, मैं पूरी कर लूं बात अपनी। मैं ये कह रहा था कि one graduates gradually into a higher stream of knowledge when we are at a place where we are not that much groomed to be, in the final stage of our wisdom. उस स्टेज तक पहुंचने के लिए there are certain things which must be ingrained in the personality. जैसे राष्ट्र प्रेम है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, मैं समझता हूँ, या मेरा परसेप्शन है that if you have राष्ट्र प्रेम, you will be then only interested in your own culture and your heritage and all those things. Once you feel good about it, then you start learning about it. Then that is what Sanatan Dharma used to do, because that is how so many great teachers and people have happened in this country. तो ये जो एक सोच है, इसके प्रति एक जागरूकता और उसके प्रति एक फिर शिक्षा, और वही शिक्षा फिर आगे ले जाएगी। मेरा मतलब ये था कि एक ग्राउंड बनना चाहिए, उसके ऊपर में फिर फर्दर लेयर्स बन सकती हैं एक अच्छी ह्यूमन बीइंग की, जो फिर who can ultimately reach the stage where we are now trying to say that we should be. बट फिर हर कंट्री की अपनी एक वो होगी ना संस्कृति, तो सब अपने को वो मानेंगे तो फिर झगड़ा तो वहीं का वहीं रहेगा ना। May I make a suggestion? We are doing a very specific narrow thing right now, है ना? So maybe कल सुबह हमारे पास time है, why don't we have this discussion tomorrow in the morning and just stay with the content of what we are doing just now? Can I make that request? We are trying to see वो जो sutta है ना, and maybe Nikhil you can display it. I think part of the confusion is that हमारे पास वो framework शायद clearly नहीं है, इसलिए मैं chat में लिख रहा हूँ बार बार कि sutta में क्या कहा जा रहा है. So we are really trying to see
and maybe let's limit ourselves to that for the moment. और फिर वो discussion हम कर सकते हैं at the right time we can do that discussion. ये framework को हम कोशिश कर रहे हैं संज्ञा के context में अपने खुद के जीवन में examine करने की. So let's maybe try and see what are our respective gratifications, and then if we are not seeing the danger, then obviously, like he said, the next step won't occur. इसे जो भी स्टेटमेंट दी जाती है, जो भी हमारे परसेप्शंस हैं, वो ठीक है कि गलत है, उस पर हम विचार नहीं कर रहे हैं. हम तो ये कह रहे हैं कि जो भी परसेप्शंस हैं उसके आधार पर सुख और आनंद उत्पन्न होता है, including this perception which Rajendra ji is mentioning. But then the second very important statement is being made कि हर परसेप्शन जो है वो अनित्य है, दुख है, विपरिणाम धम्मा. ये उसका खतरा है. Now this is a very important thing. ये पहले भी मैंने पिछली बार भी वेदना के संदर्भ में भी कहा था कि हम सोचते हैं कि खतरे की क्या जरूरत है इसको चर्चा करने की, क्योंकि जब तक हम खतरे को समझेंगे नहीं तब तक उसको ट्रांसेंड करने की आवश्यकता क्यों समझेंगे. जो प्लेजर आ रहा है किसी भी परसेप्शन से, including any perception, including the one which Rajendra mentioned, that is giving us joy, feeling good, that's very true. But do we see the danger in that? That is the point which Buddha is making here. Now it is for us to investigate and see the danger. See? तो वो जो महत्वपूर्ण बात है, ये कई बार हम कन्वेंशनैलिटी में भूल जाती है. ये this is not a teaching from the worldly point of view, the teaching from the point of view of the liberation from the cycle of birth and death. It is teaching from that perception, from that angle. कि ये पहला पार्ट है उसका, संज्ञा के आधार पर जो सुख और आनंद है वह है संज्ञा के आस्वाद. तो इसका हमने उदाहरण देखे कुछ, और इसके सामान्यतः उदाहरण जैसे मैंने कहा रूप के प्रति है, गंध के प्रति है, शब्द के प्रति है. इस तरह का म्यूजिक मुझे बहुत अच्छा, मेरे परसेप्शन है कि जो मान लीजिए क्लासिकल म्यूजिक बहुत अच्छा होता है. जब भी कोई बात क्लासिकल म्यूजिक होती है तो मुझे वो बहुत सुख मिलता है. फिर लोग उसको अनुमोदन करते हैं तो और सुख मिलता है और उसके प्रति राग जागता है. तो वो कहा जा रहा है कि वो संज्ञा भी जो है आपकी, चाहे वो कितनी भी ठीक हो वर्ल्डली सेंस में, वह अनित्य, बदल जाएगी कभी ना कभी, और उसके प्रति अटैचमेंट जो है दुख का कारण है, क्योंकि आपके कंट्रोल में नहीं है. With conditionality changing the conditions, things will change. It applies to everything, and we know अगर हम अपने जीवन के लाइफ स्पैन को स्क्रूटिनाइज करें और एक सिंहावलोकन करें, retrospective view, how much our perceptions about people, say रूप, about sounds, about food and tastes, about smells, about touches, how much it has changed. Enormous changes have happened in our own lifetime. And if we stick to this one particular perception and hold it to be right, how much conflict we create in the society, in our own family, in our own society. How one should dress, what is a good way of dressing, what is a good way of speaking, what kind of language should one use towards elders. There are perceptions which are conditionalities. When you travel abroad, you find totally different perceptions of people. And you get really, if you are holding on to one such perception, कि यही ठीक है, मेरे देश का perception ठीक है, मेरा perception, you're in deep trouble, enormous trouble. That's the point being made, कि वो हमारा बंधन का कारण बन रहा. तो वो चर्चा कर रहे हैं कि हमारा बंधन का कारण है ये, कि संज्ञा के प्रति जो सुख जागता है उसमें हम आस्वादन लेते हैं तो उसके प्रति और अटैचमेंट जागता है. तो वो बात बताई जा रही है. और इसीलिए कहा जा रहा है कि हर संज्ञा, कोई स्पेसिफिक संज्ञा की बात नहीं, एवरी संज्ञा, उसके प्रति छंद राग विनियो छंद राग बहानम. संज्ञा के प्रति इच्छा और वासना का त्याग, यह है संज्ञा के चंगुल से मुक्ति. जिस किसी भिक्षु, श्रमण या ब्राह्मण ने संज्ञा को इस प्रकार प्रत्यक्ष रूप से जान लिया, जैसा वो इस संपूर्णता प्राप्त कर चुके हैं
उनका पुनर्जन्म का चक्र नहीं चलता। वट्टम तेसम नत्थि पन्या बनाया। This is the key thing, because this teaching is for that purpose, for liberating us from the cycle of birth and death. It doesn't have anything directly to do with the worldly affairs of the nation or of people. It has to do with our freedom from the cycle of birth and death. And of course, it will have a bearing on our day-to-day life, but we can see it when how do you perceive our day-to-day life? किस एंगल से हम अपने day-to-day life को देख रहे हैं? हम मुक्ति के नजर से देख रहे हैं, या समाज के नजरिए से देख रहे हैं, या देश के नजरिए से, या एनवायरनमेंट के नजरिए से, या सोशलिज्म के नजरिए से, कोई भी. Every Saññā, howsoever beautiful it may be, howsoever nice it may be, is anicca dukkha viparinama. That's something deep, worth deep contemplation. क्यों कई चीजें ऐसे हमें लगती नहीं है, उनमें भी कोई दुख हो सकता है, वो भी बदल जाएंगी. But since we have lived long enough, we know that it does happen. Our perceptions about people, when I was young, we had certain perceptions about people who are great people of our country. They have changed drastically over the years with additional information, with talking to people and knowing about them, and my own views about what is right, what is wrong. So they change. So that's a very crucial teaching for us to reflect upon. Yes, Professor Surendra Prasad, आप कुछ कहना चाहते हैं? Just a query. I think for the purpose of the discussion that we are having, views and perceptions are Saññā is probably one and the same thing in some sense. Yeah, we can say that. I mean, of course, technically there's a new different word, but we can leave aside that, finish and take it that. Okay. But then when you talk about right view, that's also in some sense an absolute of perceptions in some sense. Yeah, that's why I'm saying Saññā to Panya. Ji. From Saññā to Panya. Anicca, for example, Anicca Saññā, Dukkha Saññā, Anatma Saññā. Correct. They are based on Yoniso Manasikara. They are based on looking at things from their root. Okay. So we're not saying that there is nothing like a right perception. We're not saying that. Okay. These are the perceptions which liberate us. The normal perceptions bind us. Now it's our choice. If somebody is a worldly person, he will think ये अनित्य वन्यत्य क्या बकवास है यार. संसार को सुधारना है, दुनिया को सुधारना है, हमें अच्छी सोसाइटी बनानी है. So you should have the perception of some other kind. For him, this perception doesn't make sense. So we're not saying this is right or this is wrong. For our objective of liberation, that is the right. That's what. So though it seems like an absolute, but it is absolute from the point of view of liberation from the suffering. Not absolute from the point of view, for example, the health of the nation. That it may need some other perception. That's very interesting. So we have to really investigate. Because हमारा उद्देश्य क्या है, उसके हिसाब से ना. वट्टम तेन तेसम नत्थि पन्ना. उसका जो वट्ट है, मतलब जो वॉर्टेक्स है, जो चक्र चल रहा है संसार का, वो फिर नहीं बनता है. पुनर्जन्म का चक्र नहीं चलता है. That is our objective. So with respect to that objective, this is the correct perception. Anicca, dukkha, anatta are the right perceptions. But with respect to a perspective of the national aggrandizement, making nation great, there may be other perceptions as well. So दर्शक, can I check? ये जो आस्वादन है, मुझे अब ये समझ आ रही है based on your reactions to some of the examples कि सभी perceptions में हम आस्वादन नहीं लेते हैं. Is that right? सब में हमें gratification नहीं मिल रही है. जो जिन perceptions को हम बना के रखते हैं अपने साथ, उसका बना के रखने का कारण यही है कि वो हमको ठीक लगते हैं. हमारा कोई भी परसेप्शन, जो मेरा परसेप्शन है,
कुछ भी, हर एक रूप के बारे में, हर किसी के बारे में, वो क्यों है बनाया हुआ मैंने? क्योंकि वो मुझे ठीक लगता है, तभी तो कहते हैं। और इसलिए जब मुझे वो याद आता है और जब उसका अनुमोदन होता है तो प्रसन्नता जागती है, खुशी जागती है, राग जागता है, तो उसमें आस्वादन तो निहित है। हम विचार कर it's referring to जो everything then, huh? एवरीथिंग, ऑल द संन्यास। तो शील के प्रति भी तो हम अपना आस्वादन रखते ही हैं। You can call it a धम्म संन्या if you like, yeah, certainly. और उसके प्रति भी अगर अटैचमेंट होगी तो शीलवत परामर्श हो जाएगा हमारे। हाँ, मतलब वो ये है कि अटैचमेंट, बट उसका मतलब ये नहीं कि शील छोड़ देने हैं, है ना? वही मतलब जो ये शील, जब हम कहते हैं कि हमको शील का पालन करना है, हाँ और वो जी, जो है 5 शील हमारे को बिल्कुल अच्छी तरह से पालन करने हैं, तो उसके जी, प्रति हमारी क्योंकि बहुत उसके प्रति श्रद्धा भी है और अटैचमेंट भी है, दोनों चीजें हैं। हाँ जी, जी। एंड इफ समबडी डज नॉट फॉल इन दैट, तो वहां कुछ From पीड़ा the भी। from the point of view of liberation from cycle of birth and death, शील के प्रति, शील को पालन करना है, इज अ राइट परसेप्शन। और उसके प्रति भी अटैचमेंट होगी तो शीलवत परामर्श हो जाएगा। Then you will take that, hold on to that as the ultimate, and then if that is a fetter, that is what. वही मेरा कहने का मतलब था कि at up to certain level, when you have to have attachment, but gradually you reach a stage where that becomes part of you, then that attachment is of no meaning. Yeah, you can say so. If I mean attachment शब्द का, क्योंकि वो implication अलग है ना, तो इसलिए उस शब्द का इस्तेमाल न करके ये कह सकते हैं कि शील को पालन करना हमको आवश्यक काम है। It is a part of the eightfold path. That's it, simple as that. जो हमने अभी राजेंद्र जी जो कह रहे हैं, अभी हमने चर्चा की थी ना, ये जो चर्चा की थी इससे पहले, मैं अभी स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ। फस समुदय संन्या समुदयो, फस निरोधा संन्या निरोधो, अयमेव अरीको अठंगिको मग्गो, संज्ञा निरोध गामिनी पटिपदा। क्योंकि हमारा उद्देश्य संज्ञा को से छुटकारा पाना है, रूप से छुटकारा पाना, हर एक 5 खंडों से छुटकारा पाना है, तो इसका मार्ग है अष्टांगिक मार्ग। तो इसलिए उसके लिए हमको शील का पालन करना पड़ता है, वो हमारे अपने अनुभव में भी आता है, और इसलिए it becomes the right perception for us. It becomes a right perception for those who want to follow this. For those who don't want to follow it, say my perception of life is I must maximize my wealth. तो शील की क्या है? शील तो पर obstruction हो गया फिर, and he may do something else. Okay, so we have to see what are we talking about. What is our goal? What is the direction in which we are moving? It's all moving in that direction. रूप निरोध गामिनी, वेदना निरोध गामिनी, संज्ञा निरोध गामिनी, संखार निरोध गामिनी, विज्ञान निरोध गामिनी पटिपदा. All 5 khandas we want to get free from. Dukkha nirodha gamini, we want to get free from all suffering. So with that respect, there are some correct perceptions, but even those have not to be grasped as the ultimate end. They have to be used carefully, properly. They are the means of crossing over. They are just like that. Once we realize their value, they become a part of us. They become our day-to-day life. Because we realize कि उसको तोड़ने से हमें दिक्कत होगी, भाई दुख होगा, काहे करेंगे? हमारा उद्देश्य है दुख से मुक्ति, और हमें मालूम पड़ गया कि ऐसा ऐसा करने से वो शील हो जाए, समाधि हो चाहे प्रज्ञा हो, उसको गड़बड़ करने से दुख होता है यार, नहीं करेंगे। बार बार करके देख लिया, दुख भोग लिया, समझ आ गई, that naturally drops off. पहान का मतलब ये है कि वो ड्रॉप ऑफ हो गया। Sir, I just want to ask you, ये जो when we drop it, seeing the danger,
मैं अभी विचार कर रही थी, पहले मुझे ये फूड के प्रति ऐसे था कि ब्रेकफास्ट के टाइम पर आई हैव टू हैव फ्रूट्स एंड प्रॉपर ब्रेकफास्ट, लंच के टाइम पे रोटी सब्जी खाना है, ब्रेकफास्ट की आइटम नहीं चलेगी। अब मुझे ऐसा नहीं है, कुछ भी खा लो चलेगा। बट नाउ व्हेन आई कॉन्टेम्पलेट एंड रिफ्लेक्ट, इज इट बिकॉज आई हैव टू डू एवरीथिंग ऑन माई ओन, तो चलो एडजस्ट कर लो, am I compromising or actually I'm seeing it? ऐसे बहुत सारी चीजें वो अपने आप होती है। सो हाउ डज वन डिफाइन दैट? उस टाइम पर तो डेंजर तो नहीं देखा था, अब मुझे ऐसे लग रहा है हाँ परफेक्शन को छोड़ देना चाहिए, खा लो जो भी है मिल रहा है। Are you okay, sir? ठीक है। See, जो आप बात कर रही हो ना बेटा, वो those are essentially we have to put it in this category only. I don't want to discuss other things. Okay. What is good from health point of view, your perception about that has changed. So that only shows Saññā is changing. That's all. That's how I'll interpret it. Okay. That's true of all of us. पहले हम कुछ सोचते थे ये खाना अच्छी चीज है, फिर उसके बारे में पढ़ा लिखा या अनुभव हुआ, फिर बदल दिया। पहले लगा ब्रेकफास्ट नहीं करना चाहिए, फिर कहा ब्रेकफास्ट करना चाहिए, किसी का मीट सब्जी खानी चाहिए, किसी ने कहा नहीं वो भी खाना चाहिए। Those are all worldly stuff. This is all worldly stuff about perceptions about food or from the point of view of health. Those even doctors keep on changing their view about what are the health parameters. So they have nothing to do with freedom from suffering. They may have implications with respect to health, and therefore that is the domain of health experts. This is some psychological suffering. So from that point of view, the recognition why Saññā badalti rehti hai in the light of knowledge, in the light of experience. From all that you have said, I would conclude, yeah, this is true. If I hold on to any particular Saññā, then I will suffer. So I should give up attachment to sannyas, and depending on whatever is the conditionality, whatever is the current state of knowledge, I can do whatever I wish, whatever is possible, because that is the limitation I have. कोई भी डिसीजन लेने के लिए हमारा क्या बेसिस होगा? जो इस समय मेरी नॉलेज है उसके हिसाब से मैं डिसीजन ले लूंगा। भोजन के बारे में हो, कपड़ों के बारे में हो, घर के बारे में हो, वेदर के बारे में हो, कुछ भी हो। That is a different worldly aspect. It has its value. I'm not saying it is not valuable. It has its own value. But from the point of suffering, the key issue is संज्ञा के मैं पहले मेरा परसेप्शन था कि एक समय कि भाई सिर्फ नेचुरल फूड खाना चाहिए और we should take only boiled vegetables, raw food and all that. And yeah, and that used to give me a lot of happiness. Yeah, this is good. This is what everybody should do, and I would keep on preaching to everybody. But then some experience happened and I realized that ये तो चलता नहीं, गड़बड़ है. Then I realized कि तो दुख का कारण हो गया, इसके प्रति अटैचमेंट कर ली तो दुख का कारण हो गया. And then you realize कि नहीं चेंज है, तो ये खतरा भाई किसी भी परसेप्शन को बांध के रखना ठीक नहीं है. You must look at the current state of knowledge and the views of others. डॉक्टर्स का व्यू देखना चाहिए. So then it changes. So you then finally realize कि भाई हाँ ठीक है, इस समय मेरी जितनी नॉलेज है उसके हिसाब से मुझे ऐसा करना है. संसारिक क्षेत्र में मैं करूंगा. That may not be perfect, that may not be absolute, but that's the best I can do. So there's no problem about that. The issue is about attachment to perceptions, and the issue is about not realizing they are their conditional nature. They being anicca means they are changing because of their own nature and because of conditionalities, because of knowledge, because of the influence of other people, because of my own experience. They keep on changing. And therefore, if I hold on to them, I will suffer. No? So this is the point which we should focus on in our discussion here. Other things are not directly relevant. Also very important, they may be from our health and other perspectives. Okay? Yes, got it.
So just very briefly, since we are at 8:30 already, अब यहाँ जो विनय और प्रहान है, यहाँ भी would you advise somewhere first and Yeah, so exactly. maybe give if you would Yeah. illustrate it with one example. Yeah. Chand Raga Vinayo, Chand Raga Pahanam. These are the kind of stages of abandoning or dropping away of the attachment to Saññā. कि भाई हमने we realize the limitations of Saññā being impermanent and changing, and then we try to bring about a giving up the attachment. Giving up the attachment to a perception is in fact more difficult than giving up attachment to people, because we hold on to them. Perception I've held for years and years about various things, about people, about taste, about smell, about touch, and then so we have to adopt a क्या कहते हैं इसको इंद्रिय संवर करना होगा. हाँ भी. So what is that? What is इस that? तरह के इस संज्ञा के अनुसार जब मेरा मन जब मैं एक्शन लेना चाहूंगा, I'll hold on and hold on and see whether that is appropriate at this moment, whether I'm attached that sanya is, I'm willing to see the sanya to change. संज्ञा का अगर संज्ञा में जब चेंज करना है और उसको ड्रॉप करना है संज्ञा के प्रति अटैचमेंट को, then there will be always a attention in that process of transformation. छंदा संज्ञा के प्रति जो राग था उसको ड्रॉप करने में टेंशन होता बड़ा. So somewhere will look like what? The tentativeness, is it? Tentativeness का somewhere कह रहे हो क्या? जो हमने अभी कई बार discuss किया. Yeah, let's take an example. Say there's a perception about food, for example. Okay, रस के बारे में perception है कि and I've held a perception कि इस तरह का भोजन ही बिल्कुल ठीक है और यही खाना चाहिए. और अब अनुभव के आधार पर, दूसरों की बात पे, शिक्षा के आधार पर, किसी भी कारण से लगा यार ये परसेप्शन तो गड़बड़ है. This should be dropped. This attachment to this kind of a food should be dropped. It's not good. It's harmful. No, the dropping does not happen immediately. So in the process of change, there will be resistance and there will be a kind of a difficulty. So we gradually change that habit pattern of food. कि भाई अब थोड़ा करके change करके we drop that attachment to that perception, and eventually it drops off totally. With deeper understanding and reflection, that perception changes. So the initial effortful giving up or effortful. I see. Okay. Till it becomes effortless. Till it becomes based on panya, and then it drops off. Okay. Same thing was with respect to Vedana. Same thing was with respect to Rupa. Everywhere, same thing, in my understanding. Yeah, I mean, Vedana, it was a little bit easier. Rupa, it was a little bit easier to understand because there was an object. Yeah, यहाँ पे तो क्योंकि एक subtle non-material, वो भी वेदना भी non-material लेकिन experience होती है. दर्द होता है. ये संज्ञा का experience नहीं होता, इसलिए दिक्कत है. So the initial enduring, for example, of unpleasantness is the samvara aspect, is the vinaya aspect. Yeah. That's what it seems to me.